Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hina Masar, and this is the fourth part of this series of presentation on basic dermoscopy, and I will discuss the algorithms and approach to diagnosis, which is, I think, the most tricky part in learning dermoscopy. So algorithms, बहुत सारे different algorithms हैं. Different people tend to use different algorithms, but I'll discuss the algorithm which I like the most and which I think is the easiest one and probably the most practical one, right? This is called two-step algorithm. और भी two-step algorithms हैं dermoscopy में, but this one is my favorite because I think this is the easiest one, easiest to follow, most simple one. Or when I was doing my training in England, I saw most of my colleagues following this. तो ये two-step algorithm क्या है? By the way, ये वाला algorithm, this is only for the tumors. ये inflammatory lesions के लिए नहीं है. This is for the tumors. I mean cancers or pre-cancer skin lesions or the benign lesions. Okay, whenever you will see any pigmented skin lesion, this would be either a melanocytic or non-melanocytic. आपने first step में उसको आपने ये judge करना है whether the lesion is melanocytic or non-melanocytic. अब आप ये कैसे बताएंगे कि lesion melanocytic है? So in order to identify any lesion as a melanocytic lesion, you'll have to learn the dermoscopic alphabets of melanocytic lesions. अब ये dermoscopic alphabets melanocytic lesions के कौन-कौन से हैं? Just learn these 4 patterns. सारी की सारी melanocytic lesions इन्हीं 4 patterns में ही fall करती हैं. ये 4 patterns कौन-कौन से हैं? This is the reticular pattern, then globular pattern, the clots, then structureless area or homogeneous pattern. The fourth one is the starburst pattern. Just learn these 4 patterns: reticular, globular, homogeneous, starburst. सारी की सारी melanocytic lesions इन्हीं 4 patterns में fall कर रही होंगी. And there is one additional pattern for the lesions over the glabrous skin, the palms and soles, which is the parallel pattern. So, जितनी भी melanocytic lesions हैं, they would be either reticular or globular or homogeneous or starburst or the parallel pattern. Right. So, first step पे हमने बताया कि whether the lesion is melanocytic or non-melanocytic. And second step पे melanocytic lesion हमने identify करनी whether it's a nevus or melanoma, whether it's a benign lesion or a sinister lesion. और अगर आपको उन 4 या 5 पैटर्न में से कोई भी पैटर्न नहीं मिला, that means the lesion is not a melanocytic lesion. The lesion is a non-melanocytic lesion. और non-melanocytic lesion की again ये कुछ जो है benign lesions में usually they are dermatofibroma or seborrheic keratosis or hemangioma. Or malignant lesions are usually basal cell carcinoma or squamous cell carcinoma, or pre-malignant would be usually the clinic keratosis or Bowen's disease. Right? So this is the whole 2-step algorithm. On the first step, you will identify whether the lesion is melanocytic or non-melanocytic. अगर melanocytic है तो फिर nevus है या melanoma है, और non-melanocytic है तो benign है या malignant lesion है. Now this is the most difficult part. To identify any melanocytic lesion as a nevus or suspicious or melanoma. जितनी भी dermoscopy पे आज तक काम किया है, dermoscopy originally क्यों बनी थी, क्यों डिवाइस किया गया था ये clinical examination का method? Because of the melanomas, because of these melanocytic lesions. क्योंकि as I discussed earlier, the incidence of melanoma is so high, and approximately 8,000 people die every year in USA because of melanoma. So जितनी भी हमारी approaches हैं, जितनी भी हमारे algorithms हैं, सारे के सारे start ही शुरू से ही सारे के सारे melanoma की diagnosis के इर्द ही घूम रहे हैं, right? So कैसे आप, so what should be your approach? बहुत सारे algorithms हैं, बहुत सारी approaches हैं. अब यहाँ पे मैं I'll discuss briefly the history. शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी इस पर डेवलपमेंट हुई उसमें मेजॉरिटी जो है एल्गोरिथम्स या अप्रोचेस, एंड देन आई विल टेल यू व्हिच वन इज़ माय पर्सनल फेवरेट एंड व्हिच वन आई सॉ माय सीनियर्स एंड माय कोलीग्स फॉलोइंग इन इंग्लैंड, बैक इन इंग्लैंड, राइट? ओके, सो द फर्स्ट वन वाज दिस पैटर्न एनालिसिस व्हिच वाज डिवाइस्ड बाय डॉक्टर पेहाम बर्गर इन 1987. ये काफ़ी इसमें मेटाफोरिक टर्मिनोलॉजीज थी और ये काफ़ी मुश्किल पैटर्न एनालिसिस था, जो कि which was very difficult to understand, especially by the novice dermoscopists.
बिगनर्स के लिए उसको अंडरस्टैंड करना इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो ये बाद में फिर बहुत जल्द ही ये ऑब्सोलीट हो गया. फिर 1994 में एक और ABCD रूल आया विच वॉज अ बिट ईजियर, लेकिन अगेन इट वॉज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. अब इस ABCD रूल में जिस तरह आप क्लिनिकली किसी भी नेवस को या मेलनोमा को को ABCD रूल के ऊपर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वेदर इट्स बेनाइन, बेलाइन और इट्स मैलिग्नेंट, इसी तरह टर्मोस्कोपिकली भी एसिमेट्री, बॉर्डर, कलर और डिफरेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के ऊपर आप इसकी स्कोरिंग करते हैं. ठीक है, अभी स्कोरिंग होती है, फिर स्कोरिंग के बाद उसके वेट फैक्टर्स बनते हैं और फिर वेट फैक्टर्स के बाद एक टोटल स्कोर बनता है, टोटल टर्मोस्कोपी स्कोर. इफ दिस टोटल टर्मोस्कोपी स्कोर इज लेस देन 4.75, this is a benign lesion, and if more than 5.45 then it's highly suspicious for melanoma. Like again, it was quite difficult, it was quite complicated. Consider yourself sitting in a busy OPD, और अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है and you have to check 4 or 5 different skin lesions, तो हर skin lesion के ऊपर इतना टाइम लगाना was not practical. ये ABCD रूल की एग्जाम्पल है. यहाँ पे TDS was 7.8, so this was highly suspicious for melanoma. Again, upper lesion में the TDS was 2, so it was benign, and TDS was 7.7, so it was likely malignant. अब ये काफ़ी complicated था. तो 1996 में एक Menzies method आया, which was a bit easier, which was a bit you can say more simplified. और Menzies method क्या था कि for melanoma to be diagnosed, a lesion must have neither of both negative features and 1 or more of 9 positive features. अब इसमें 2 इन्होंने नेगेटिव फीचर्स बता दी और 9 और मोर पॉजिटिव फीचर्स बता दी. It was a bit more simplified as compared to the previous pattern analysis or the ABCD rule, but again it was not very practical and it was quite complicated. अब Menzies method के बाद एक और method आया which was the 7-point checklist. डॉक्टर आगेंजियानो ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ टर्मोस्कोपी के ऊपर, बहुत ज़्यादा. तो उन्होंने 1998 में उन्होंने उनके कोलीग्स ने मिलकर एक 7-point चेकलिस्ट बनाई. एंड दिस 7-point चेकलिस्ट वाज अ बिट ईजियर टू फॉलो. अभी 7-point चेकलिस्ट में क्या था, देयर वर 3 मेजर फीचर्स जिनके हर एक के 2 पॉइंट्स थे और 4 माइनर फीचर्स थे. मेजर फीचर्स कौन से थे? एटिपिकल पिगमेंट नेटवर्क, ब्लू वाइट फिल, एटिपिकल वैस्कुलर पैटर्न, और माइनर में irregular streaks, regression structures, irregular pigmentation and irregular dots and globules. अगर total score is less than 3 तो it's melanoma, और अगर more than 3 हो, it's non-melanoma, और अगर more than 3 हो तो it's melanoma. Again, it was easier as compared to the previous pattern analysis and ABCD rule and Menzies method, लेकिन yet it was a bit difficult. थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स नॉट वेरी वेरी प्रैक्टिकल कि आप हर पेशेंट के ऊपर हर लीजन, especially if somebody comes to you with, for example, familial atypical multiple mole in melanoma syndrome, या कोई आपके पास xeroderma pigmentosum के साथ पेशेंट आ जाता है who has many concerning lesions, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अब ये 7-point चेकलिस्ट है. यहाँ पे 7-point score was 7, so this is highly suspicious for melanoma. So from pattern analysis, after multiple steps, we move to 7-point checklist, and then we move to a 3-point checklist. Moving on to simplify the algorithms, and the easiest and the simplest one, especially for the novice dermoscopists, is the 3-point checklist. अब 3-point checklist क्या है? इसमें they did this study जिसमें 231 skin lesions को they divided between the expert and non-expert dermoscopists. When making the overall diagnosis, the sensitivity of diagnosing a melanoma by the non-experts was 69%, which was surprisingly increased to 96.3% by non-experts when using the 3-point checklist. So what is this 3-point checklist? This 3-point checklist has just 3 points: the asymmetry, atypical network, and blue-white structures. Asymmetry is the asymmetry of color and structure in one or more perpendicular axes, while atypical network is the pigment network with irregular holes and thick lines. Blue-white structures are any type of blue and or white color. Beginners के लिए, novice dermoscopists के लिए, it's very easy to follow. So asymmetry of structure. This is the symmetrical structure,
while this is asymmetrical structure. इसमें आप देखें कि चाहे इसमें दो डिफरेंट तरह के आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे होमोजेनस है और यहाँ पे स्ट्रक्चरलेस एरिया और सेंटर में ग्लोबुलर एरिया, लेकिन अगर आप इसको दो परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड करेंगे तो दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको दो एक्सिस में डिवाइड करेंगे तो दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. So this is called the asymmetry of structure. Asymmetry in any axis, taking into account the colors and structures, but not the shape. Okay. A reticular network is considered as an atypical network when the lines of the net have differences in their thickness and the sizes of the hole are non-homogeneous. The atypical network is usually regularly distributed within the lesion. अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो थिकनेस ऑफ दीज लाइंस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, और इसी तरह सिमिलरली जो होल्स हैं इनके साइजेस भी इक्वल नहीं हैं. ब्लू वाइट स्ट्रक्चर्स इंक्लूड एनी वाइट और एनी ब्लू कलर प्रेजेंट इनसाइड द लीशन. द ब्लू वाइट स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द पेपरिंग, और ये पेपरिंग क्यों होती है? इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मेलानोफेजेस. और ब्लू वाइट वेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्लू वाइट वेल इज बिकॉज द ऑर्थोकेरेटोटिक हाइपरकेरेटोसिस ओवरलाइंग अ पिगमेंटेड ट्यूमर, देन वाइटिश स्कार विच इज ड्यू टू फाइब्रोसिस, और एनी blue structures of blue color present in the lesion. Let's practice this 3-point checklist. By the way, what is this? Is this melanocytic lesion or non-melanocytic lesion? Which type of network are you seeing here? This is reticular network, and reticular network is one of the dermoscopic alphabets of melanocytic lesions. So this is a melanocytic lesion. Okay, right. The checklist contains 3 points: asymmetry, atypical network, and blue-white structures. Is this asymmetric? This looks slightly asymmetric, so 1 point for asymmetry. Is there any atypical network? No atypical network as such. Are there any blue-white structures? No, I can't see any blue-white structures. So the total score here is 1. By the way, if the score is 0, it's a benign lesion, which comes in green zone. If the score is 1, then it's the yellow zone. That means that we should monitor that lesion. If the score is 2, it's red. That means that there is a suspicion of sinister pathology. So हमें ऐसी lesion को या monitor करना है और या फिर exercise करना है. And score 3 is definitely a melanoma. Let's apply the checklist here. Is there any asymmetry? Definitely there is asymmetry. Any atypical network? Definitely. This all is the atypical network. You can see the radial lines, then thick lines and irregular holes here. Is there any blue-white structures? Definitely. This asterisk represent the blue-white structures. So the score here is 3, and this is most likely a melanoma. Another one. Is there any asymmetry? Not as such. If you divide into 2 planes, this is more or less mirror image of each other. Is there any atypical network? No. Are there any blue-white structures? No. So the total score is 0. So this is a benign nevus. So to simplify the approaches, we moved from pattern analysis to the 7-point checklist and then to the 3-point checklist. Lekin abhi practically there is just 1 point. And what is that 1 point? That is the heuristic approach. We don't use the algorithms anymore. What we use is the elephant approach or the plank approach or the heuristic approach. And in simple words, it's the gut feeling, right? So what is the heuristic approach? अब इसमें इन्होंने एक स्टडी की थी इन dermoscopists ने, जिनमें डॉक्टर किटलर भी शामिल थे, डॉक्टर आगेंजियानो भी थे. They did this study on the medical students. They divided the medical students into 2 groups. और एक ग्रुप को इन्होंने एनालिटिक अप्रोच सिखाई, उसकी ट्रेनिंग दी, और दूसरे ग्रुप को सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखाते रहे. दिस इज़ बेनाइन, दिस इज़ मेलिग्नेंट, दिस इज़ नेवस, दिस इज़ मेलानोमा, दिस इज़ एटिपिकल नेवस, दिस इज़ BCC, SCC. और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग उन दोनों ग्रुप्स का टेस्ट लिया, एंड द रिजल्ट्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स वर कंपेरेबल. ओके, सो ह्यूरिस्टिक अप्रोच या ब्लिंक अप्रोच या इसको एलिफेंट अप्रोच भी कहा जाता है. अभी क्या चीज़ है एलिफेंट अप्रोच? इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई आस्क यू हाउ यू विल teach your child
that this is an elephant, तो आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि ये elephant है? Will you speak about the criteria to diagnose this as an elephant, like 2 big ears, trunk, etc., etc.? Or will you just show the picture of the elephant to your child and you will tell him or her that, see, this is the elephant? आप उसको एक पिक्चर दिखाएंगे, फिर दूसरी दिखाएंगे, एक और एंगल से दिखाएंगे, पीछे से दिखाएंगे, साइड से दिखाएंगे, and you will tell your child that this is elephant. Ultimately, your child will start recognizing elephant. शुरू में मे बी 2 एनिमल्स में से एक को एलिफेंट रिकग्नाइज करे, फिर 5 में से, फिर 10 में से, और अल्टीमेटली इफ यू विल शो हिम 100 different pictures, he or she will be able to identify the photo of the elephant, right? This is called heuristic approach or blink approach. आप इतनी प्रैक्टिस करें नॉर्मल स्किन लीजन्स की, डेमोस्कोपिक फोटोग्राफ्स की भी, और सिनिस्टर पैथोलॉजीज़ की भी, कि आप जैसे ही उस तरह की और पैथोलॉजी और डेमोस्कोपिक फोटोग्राफ आपके सामने आए, यू शुड बी एबल टू डायग्नोज देम इन द ब्लिंक ऑफ द आई, राइट? ओके, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ह्यूरिस्टिक अप्रोच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ह्यूरिस्टिक अप्रोच पे ही अमल करके बनाई गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स टू परफॉर्म द टास्क्स दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस. This AI has the ability to learn from the dermoscopic images and subsequently provide an image-based diagnosis, right? इसमें करते क्या है? इसमें a large number of clinical images labeled with the diagnosis, they are fed into the computer system, and then the system extracts the features and the feature maps from these images and learn to diagnose the images, right? This AI relies on the technologies and algorithms, okay? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह से ही जब आप एक ह्यूमन ब्रेन में भी मल्टीपल टाइम्स बिनाइन या सिनिस्टर पैथोलॉजीज़ की फ़ोटोग्राफ्स आप फीड कर देंगे, आप बार बार दिखाएंगे, तो अल्टीमेटली द माइंड वुड स्टार्ट पिकिंग अप द बिनाइन एंड मेलिग्नेंट कंडीशंस ऑन इटसेल्फ. ओके, फिर मॉडिफाइड पैटर्न एनालिसिस आया था. आई एक्सप्लेन दैट अर्लियर एज वेल. देन देयर वाज अनदर एल्गोरिथम कॉल्ड एज स्टाडा एल्गोरिथम, which is tries amalgamated dermoscopic algorithm, not a very simple one again. Then there was revised 2-step algorithm, right? ये वो 2-step algorithm नहीं, this is another 2-step algorithm. Again, not very simple, not for the novice dermoscopists. Okay, right. What should be the practical approach to diagnose the melanoma? There are 3 rules, okay? The rule number 1 is blink. The heuristic approach, the elephant approach, or the blink approach, your gut feeling. See the overall architecture of the lesion, the symmetry, asymmetry, color, structure in just one blink, and decide whether this is benign or malignant. Okay? You should decide, you should see whether I am happy with the lesion or not. Right. Are you happy with this lesion? Of course I'm happy with this lesion. This looks totally benign, just one blink of an eye. Are you happy with this lesion? Of course I'm not happy. Even the blink of an eye, this looks sinister. Are you happy with this one? No. At least I'm not happy with this one. If the rule number 1 doesn't work, then move on to rule number 2. What is rule number 2? Think. What is think? Analytic approach. 3-point checklist, or one of the 7 melanoma specific features in the 7-point checklist, right? Analytic approach. You can apply the analytic approach if the blink doesn't work. If that doesn't work even, then rule number 3 comes in, which is compare. When blink and think don't work, just follow the comparative approach. What is comparative approach? Okay, look at this man. There are so many different pigmented lesions on the back of this patient, right? Up dermoscopy पे, these are the photographs of 9 different skin lesions of the same person. अब इन 9 में से जिस तरह आप अगली डकलिंग देखते हैं ना, which one is different? तो 9 में से कौन सी different है? These, for example, this one has white clots. Again, this one has white clots. This lesion, number D, it looks different. And this is actually the melanoma. Rest all are the seborrheic keratosis. Okay, this is another skin lesion, quite doubtful
फर्स्ट लुक में, ब्लिंक में, यू कांट डिसाइड वेदर इट्स बिनाइन और मे बी मैलिग्नेंट. अगर आप एनालिटिक अप्रोच भी इस पर यूज़ करें तो इवन देन यू कांट डिसाइड वेदर इट्स बिनाइन और इट्स मैलिग्नेंट. तो आप क्या करेंगे, सेम पेशेंट की अगर और भी स्किन लीजन है उसके साथ कंपेयर करेंगे. सो इफ़ यू कंपेयर दिस लीजन विद अदर लीजन्स ऑफ द सेम पेशेंट, दे ऑल लुक मोर और लेस सिमिलर. So these all are the seborrheic keratosis, right? Or blink, think और compare के बाद भी if you're still in doubt, just cut it out. So there are so many different algorithms, so many different approaches, and you'll have to decide for yourself कि आपको इनमें से कौन सी approach या कौन सा algorithm choose करना है for yourself. But my advice for the novice dermoscopist would be to follow the 3-point checklist initially. ठीक है, और प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप अल्टीमेटली आपको जो लेवल है वो ये ह्यूरिस्टिक अप्रोच वाला होना चाहिए कि आप एक ब्लिंक में, एक नज़र में एक चीज़ देखें और आप उसको पहचान लें कि क्या है. एंड व्हेन इन डाउट यू कैन ऑलवेज लुक एट दिस 7-point checklist, right? Okay, thank you for patiently listening. See you in the next presentation. Allah Hafiz.